अभी तक तो नहीं। चलिए वैसे बात कही। How many chapters? 1, 2, uncompleted. चलो अभी आपके बारे में पूछ सकता हूँ। मैंने बस अलग है, I'll be teaching geography, यूटी में ब्ला 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 करता हूँ, एंड थोड़ा सा इंडिया और अब्रॉड में भी काम कर चुका हूँ। ऑल योर ब्लेसिंग्स। एंड पढ़ाई से ज्यादा मुझे बच्चे ज्यादा पसंद है। मतलब क्यों? लोग पढ़ते ही नहीं है, हम दिन रात है ना। सर आप एक दिन क्यों नहीं आते? मैंने मतलब आया क्यों सर? चल, तो माई मेथड ऑफ टीचिंग, आई बी एक्सप्लेनिंग बट नॉट दैट बोरिंग स्टाइल, तो अभी मालूम ही पड़ा रहेगा। आई बी वेरी हैप्पी टू मिंगल विथ यू, एंड यू ऑल्सो कैन मिंगल विथ मी ओनली इन ज्योग्राफी। बाहर बैठेंगे, हाय हेलो करेंगे, है ना। एंड मेक दिस सब्जेक्ट वेरी सिंपल। आप करेंगे या मैं करूँ? दोनों मिलके करते, दोनों मिलके, है ना। वो क्या है पुराना गाना, साथ ही मिलके हाथ बढ़ाना। देखो, आई फील व्हेन द सब्जेक्ट बिकम्स वेरी बोरिंग ना, आई कैन सी टीचर्स टीचिंग द ज्योग्राफी। बुक ले लिया, पेज नंबर, डायग्राम हो गया, चलो नेक्स्ट पेज। बचा होता मैडम नहीं हुआ, हाँ तो ठीक है ना, बाद में बात करेंगे। बट हियर 9th you'll have lot of diagrams. I will use this good LED TV for your lot of videos, which is आज मैं origin of earth दिखाऊंगा, है ना। The first chapter itself is the shape and size of the earth, है ना, और size and shape of the earth. Does it? Earth as a planet. मैं थोड़ा सा आगे चले गया। So before I start with Earth as a planet, somebody should tell me the meaning of the word geography. Study of landforms and reliefs on the planet. ये तो सब मेरे से भी ज्यादा आता है। One is geo, another is, सर दोनों नहीं चाहिए, आप जाओ सर, है ना। जियो मीन्स जैसे आपके दोस्त ने बोला अर्थ, बोले सर पुराना अर्थ है सर, एंड ग्राफी स्टडी ऑफ द अर्थ। तो तुरंत लड़का बोला बचा क्या है अर्थ में स्टडी करने, है क्या कुछ बचा? सब कुछ हम लोग ने, पोल्यूशन, है ना, डिग्रेडेशन, और वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मतलब कुछ अच्छा काम सोचता हूँ, रुको। फिर हम लोग बड़ा कंजर्वेशन करता है, मीटिंग्स करता है, सेव अर्थ, है ना, कंजर्वेशन ऑफ द ट्रीज। तुरंत पूछो किससे? हमसे, सब कुछ तो हम ही करते हैं। इट्स लाइक अमेरिका, एंड हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट? अमेरिकन। लुक एट द वर्ड इज डोनाल्ड ट्रम्प। थोड़ा सा मजाक करता है हम लोग, एंड वी ऑलवेज बिलीव अटेंडेंस शीट। अभी लेकिन हाँ ले तेरा काम भी, ये जल्दी दे दो, योर भैया इज वेटिंग फॉर यू। हाँ, मीन टाइम नाम क्या भाई तेरा? You should stand up and speak ना। Where from? Certificate. ठीक है, and you know get up, King George। यार इतना सॉफ्टली बोलेगा तो कैसे बोलेगा? My name is Sushant Sharma from Grand. सुशांत शर्मा, देखो आईडी सुशांत शर्मा, जल्दी दे। And my name is, I don't have any ID. Sit down, sit down. Hey, what's your name, guy? Huh? Which school? सब एक ही है, अलग अलग स्कूल? तीनों अलग अलग स्कूल है? ये दोनों सेम है। अच्छा, तो स्कूल में भी बेचारा ये ऐसे ही सब रहता है? स्कूल में भी पता है सर। क्यों? आज तक नहीं मिले। वेरी बैड यार, स्कूल है कि क्या है, रेल का डब्बा है, आटा डब्बा। ये दोनों नॉनसेंस नहीं। और यूटी ने मिला दिया। सच अ ट्रेजेडी, मतलब सच अ। एंड आई एम अलगेश, नाइस टू मीट, है ना। बोले आप कहाँ से आते हैं? मैं पाम बीच से आता हूँ, करीब पाम बीच में रहता हूँ, एंड थोड़ा सा पढ़ाई मैंने इसी में किया है, और थोड़ा सा स्टूडेंट्स मुझे पसंद भी करते हैं। मतलब क्यों पसंद करते हैं? टीचिंग से ज्यादा मैं थोड़ा सा उनके साथ, है ना, स्माइली, वेरी हैप्पी। So when I say geography, somebody told me, sir, earth and study. Very quickly somebody asked me, sir, history में भी ऐसा कुछ है क्या? मतलब क्यों नहीं है भाई, है ना? Study of अरे रुक जा, वो कुछ अलग है। past. I don't want to say your teacher. Sir, history is not so interesting, sir. मतलब क्यों? His story. Sir, I'll make it more interesting now. अच्छा, तुम लोग समझ गए? It is history, history. सर कभी ऐसा पढ़ाएंगे तो मजा आएगा। है मतलब तीनों है, मतलब ठीक है, अब नहीं तो कब? स्टडी ऑफ हिस्ट्री और कुछ नहीं।
So I believe when I say Earth, somebody told me, sir, it is the third planet on the Earth. Third planet in the solar system. इसके पहले 2 है और इसके पीछे शायद 5 है 6. छोड़ो सर, जो भी है अपने को. And the only planet where you and me live, what is that? Really? इधर है सर. सुबह मम्मी जो लात मार के उठा के भगाती है. शाम तक बेचारा भागता ही रहता है. कभी स्पेशल क्लासेस, कभी यूटी, कभी टेस्ट. घर कब जाता हूँ सर, इन सब से टाइम मिलेगा तो जाता हूँ. और उधर जाते ही मम्मी बोलते हैं, बूझ निकल, होमवर्क. उसका रिएक्शन देखने का. फिर क्या, कल नहीं जाना है क्या? कल भी जाना है तो बात करेंगे बाद में. फिर अभी आज मेरा कुछ पेरेंट्स से इंटरेक्शन हुआ. बच्चा पहले सुबह कॉलेज जाता है, फिर इधर आता है, फिर उसके बाद स्विमिंग क्लास जाता है, उसके बाद गिटार क्लास जाता है, उसके बाद बोला मैडम कब तो घर पे रहता है. उसीलिए तो सर भगाता रहता है पूरे दिन भर. तो बाहर ही आते हैं सर, आता है बोले कभी सोने के लिए आता है सर, सोने. फिर पता नहीं सर, सुबह उठ के फिर से भाग जाता है. मैडम उसका लाइफ छोड़ो सर, ऐसे ही रहना चाहिए. फिर हम लोग बोलते सर उसका चाइल्डहुड है ना वो खत्म हो गया. यू नो व्हाट इज चाइल्डहुड? हमारे साथ हुआ ही नहीं तो कैसे बताएंगे. So we always believe Earth, you and me are very much worried. बोला हाँ सर, मैं जिस प्लैनेट पे भी जाता हूँ ना उसको मतलब अच्छा रखता हूँ, कोशिश तो कर ही रहा हूँ. वो तो खुद ही बिगड़ जाते हैं सर, मैं क्या करूँ, है ना. It's like I always see the students, सर मम्मी मैंने उसने बोला ना तो तू, मैं फॉलो कर रहा हूँ और क्या है, मेरा दोस्त है वो, मेरा फॉलो भी नहीं कर सकता. आप मेरे दोस्त नहीं है ना. किसी के बारे में वो अच्छी दिखती है बोलूँ तो आप बोल अरे दिखती है तो अच्छी है, इसमें क्या है. पापा ठीक है, पापा नेबर के बारे में भी मुझे मालूम है, विंडो क्यों आप बंद नहीं करते हैं. नहीं बेटा वी आर फ्रेंड्स. तो निकल सब. बोले क्या फ्रेंड्स का पैसा होता है. तो मैंने लुकिंग एट द नेबरिंग प्लैनेट व्हिच इज द नेबरिंग, अच्छा ये भाई सब क्या होता है, व्हिच इज द नेबरिंग प्लैनेट टू अर्थ. Okay, it's okay. Venus, Mercury. So Earth is neither too close, correct, nor too far from Sun. So moderate temperature. not control. It is having moderate, na. वो थोड़ी Have a moderate temperature. Very good, my boy. Okay, no need to say sorry. इसमें क्या है? So first I say I study the size of the Earth, correct? Shape of the Earth, and then distance from the Sun. What else? Features. फिर वो लड़का tired हो जाता है. What not I study? Everything I study. Then what you do? I forget everything. Sir, I should understand. अभी मैं अपना घर के बारे में पूछेगा तो बताएगा कि नहीं 4th फ्लोर में रहता हूँ, 7th फ्लोर में रहता हूँ, A विंग में है, B विंग में है, 2000 स्क्वायर फीट का घर. नहीं मेरा तो 700 का ही है, बाजू को मिला लिया मैंने, है ना. और शेप कैसा है? शेप तो बहुत खराब है, मैं तो बुक्स उठा के कोने से देखता हूँ. बेचारी मम्मी टेंशन में रहती है. So when I talk about the Earth, I have to understand these features. So when I'm saying Earth as a planet, तो लड़का बोलता है कौन सा planet है वो? तो तू जिसमें रहता है. नहीं मैं तो अभ्युदय में रहता हूँ. तो क्या है? बिल्डिंग तो मेरा वही है. And he's right also. And साइड शेप का तो मालूम नहीं है. जो लंबा है 11th फ्लोर का है और मैं 10वें माले पे रहता हूँ. And don't you have any common sense, sir? 11th फ्लोर में जो रहता है उसका ही नहीं है, हमेशा कचरा उठा के मेरे पास के. मेरा तो कॉमन सेंस है, अपना कचरा मैं नेबर के बाजू में रहता था वही लेके जाता है ना. सर कॉमन सेंस पूरा फैमिली में नहीं है, मतलब है पर आपका लेक्चर के बाद जो आपने इतना बोला मुझे लगा यार ये ज्योग्राफी छोड़ के सब बोल रहे हैं. तो फिर हम लोग बोलते हैं प्रूफ क्या है, क्या किसके बारे में? द शेप. मुझे याद है किसी ने बोला फ्लैट है, किसी ने बोला स्फेरिकल है. हाँ है ना. लुक एट द वर्ड्स यूजिंग. सी फ्लैट कब था? हाँ ये रोमन चर्च ने बोल के रखा था ना. Then there was a scientist who invented what? Telescope. I think Vashi Prancholi. मैंने बोला उसका नाम क्या है? सर गालीलियो है सर उसका नाम. मतलब गालीलियो नहीं है, गैलीलियो एक ही बात. सर वो गाली लिखे निकल गए. सच बोला आपने जोकिंग. मैंने बेटा वो गैलीलियो. पढ़ो. So before that Galileo invented the telescope, people proved that it was flat. I think अपना chapter 1 में वही है.
is not flat. तो लड़के ने बोला था I don't mind. मेरा फ्लैट के बारे में बात कर, मैं बताऊँ. सर फ्लैट है, राउंड है, स्फेरिकल है, मुझे क्या है? आपका लेक्चर के बाद मम्मी ने बोला बिरयानी बना है, बस हो गया सर. Are you worried for that? Definitely. आपको चाहिए? नहीं, ज्यादा नहीं बना, आज कम बना है. और बेटा अर्थ के बारे में क्या है सर? कल सुबह बात करेंगे, छोड़ो. बोला नहीं बेटा वो स्फेरिकल है. What difference does it make? Huh? Does it make a difference? No. Yeah, why not? I was teaching something called as zenith. मुझे किसी ने बोला ये ऐसा इंग्लिश वर्ड कौन आपको टैकल आने को था? फिर मैंने बोला बेटा जेनिथ का और एक वर्ड भी बोलते हैं. वो क्या है? हाँ ये मुझे मालूम है ना. मतलब कैसे होरिजोन. अरे होराइजन एक ही बात है. होरिजोन बोलो या होराइजन बोलो. व्हाट इज जेनिथ बाय द वे? Where that sky is trying to meet the land. Is it meeting? जैसा हमारा और स्टडीज का मीटिंग होता है, फिर बाद में हम छोड़ देते लेकिन है ना. And then we will be studying that ship which is coming from a long distance. And I remember they used a word called mast, front portion of the ship. एक लड़का को मैंने रीडिंग करना था, must of the ship sir, must. मतलब बेटा उसको mast बोलते हैं. MAST लिखे तो मस्त है सर, मस्त. mast एक ही है. Then we have Bedford level experiment. You remember? The 3 sticks are planted. All are planted at the same height, even the same. But when you look at from a distance, the first appears to be lengthy. This is small. This might be the smallest. हाँ वो Bedford level है मैं बोल मैं बताऊंगा. एक experiment है, don't worry. मिडल वाला सबसे लंबा वाला क्या है? हाँ तो ठीक है ना, मैंने ऊपर ही तो ड्रॉ किया है. अच्छा ठीक है यार, कभी-कभी गलती इंसान करती है. We always believe that shape of the earth was spherical only. Then I say, since it is, We did not always believe. गैलीलियो आने के बाद तो बिलीव हुआ ना. उसके पहले तुझे कौन बिलीव करने बोला? तू पैदा होता है क्या? मैं भी नहीं होता. So we always believed when I study about the earth, I have to study about its structure also. Inner core है, outer core है ना? Crust है, mantle है. वो भी हमारा second या third chapter में आएगा. And then when I always say evolution of the life, I remember बच्चे ने बोला evolution of life is very simple. We have 2 theories. Anybody knows the name of the theory? Theory तो मैं बता दूंगा. One theory is called as Big Bang theory. नाम में ही bang है. कुछ नहीं, एक बड़ा explosion हुआ. सर ये पाकिस्तान में हुआ या यूक्रेन में हुआ? क्यों रहा ऐसा पूछ रहे? अभी उधर ही हो रहा है. और कोई आया नहीं सर, सब तो मर रहा है. ये कौन सा एक्सप्लोजन का बात कर रहा है? ये बेटा ये पुराना एक्सप्लोजन. अच्छा आपके टाइम में हुआ रहेगा, मेरे टाइम में तो नहीं हुआ है ना. तो बिग बैंग थियरी क्या बोलता है? व्हेन दैट एक्सप्लोजन टुक प्लेस सो मेनी थिंग्स ऑन द अर्थ केम. फिर एक और एक थियरी है जो साइंटिस्ट ने बोला. एनीबॉडी रिमेंबर दैट साइंटिस्ट नेम? व्हाट? चार्ल्स, अभी तो बोलो डार्विन, कुछ भी है. अभी इसका जो एक्सप्लेनेशन अबाउट द लाइफ वाज वेरी सिंपल. उसमें मतलब लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म. करेक्ट था. एक बैक्टीरिया से बना. फिर हम तक आते आते तो बैक्टीरिया ने पीएचडी कर लिया. बैक्टीरिया पीएचडी? अरे नहीं यार, एवोल्यूशन हुआ उसका. हाँ ठीक है चलो. आई रिमेम्बर देयर वाज अ ग्रीक साइंटिस्ट, एस्ट्रोलॉजर. उसका नाम किसी ने सुना है? तो लड़का बोलता बोलो तो सुनो. His name was I think Nostradamus. Nostradamus. मुझे किसी ने बोला नास्ट्राडामस. अरे नास्ट्रा नहीं है, वो नोस्ट्रा है. एक ही बात. He predicted that world will come to an end. And the source is again one small, जो आंख में भी नहीं दिखता. बैक्टीरिया नहीं, वायरस. हाँ सर, चाइना ने 3-4-5 साल पहले हंगामा मचा दिया है ना. आप लोग शायद 6th में थे या 5th में रहेंगे. And it was known as कोरोना वायरस. का नाम भी लोग नहीं, नोबल कोरोना वायरस. वो इतना नोबल है कि किसी को मारता नहीं, खुद ही इंसान मर जाता है. एंड चाइनीज आज तक नहीं मान रहा कि हमने बनाया. अरे तू बनाने की जरूरत नहीं, अभी भी है. some parts of China still they are running through. So what is good thing about Nostradamus? He said the life will start from a small organism and it will die from a small organism.
But it's not yet. नहीं हुआ है तो तू चाहता है कि जल्दी से निकल जाए हम लोग रहे थोड़ा सा मिलके लेक्चर पढ़े है ना so we always believe that when we study about the earth we also study about the evolution so now I'll show you a very beautiful video in which you'll understand that evolution story was very good and very simple but then you should understand when did the life start okay so just put the heading in your notebook today and write that small heading. I'll just tell you what all the things to write. Yeah, बोलिए. हाँ, बोलिए. आपको maths वाले कुछ है? Maths. Only things like our example. Morning पर. हाँ. चलो. Now write down the topic. Did you write the earth? Huh? School. I work in a college. Which one? उसका नाम अभी तक नहीं है. I work in CSM. PUC. चैप्टर का नाम क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है. स्कूल में भी ऐसे ही है. अच्छा, बात करने का मौके नहीं, है ना? इधर इतने ही इन्हीं का नहीं है और कोई है? आपकी क्या लड़की है? एक आपसे. कौन? मानसी. लड़का है कि लड़की है? लड़की है. अरे आजकल नाम भी ऐसे हैं तो वही शी ऑप्शन है कि ठीक है कर. लेंस रहेंगे तो जरा अच्छा से है ना? क्या? I'll show you that. Write down the introductory line. Geography has been derived from. The term geography has been derived from. Two Latin words. Put it into a different word. Geo and graphy. Have been derived from two Latin words. My English is going for a toss. Okay, this method of teaching is quite good, is it? Yes, sir. मतलब ऐसा मेथड से पढ़ाना अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा. मेरे से भी तो पूछो कि हम लोग आपको कैसे लगा. So geo and graphy. It simply means. Who can tell me what it simply means? Geo and graphy study. अरे of geo means ना बोलेंगे अच्छा मैंने जिंदगी में पहले बार लिखा हुआ है. चलेगा. भूल रहा है ना भाई. सबसे इम्पोर्टेंट है. Geo means earth. Graphy is the study of the earth. Is earth and graphy means study of the earth. सिर्फ एक दो सेंटेंस लिखेंगे फिर आपको ये लवली वीडियो देखने दो है ना. And this is the video when I like it. क्योंकि 15 बार देख चुका है अभी तक समझा नहीं समझा मजाक कर रहा. Write down one more sentence. It is the only planet. If I'm dictating fast, you let me know. I'll let you just. It is the only planet where life forms. It is the only planet wherein life forms. You understand forms, na? Yes. Can easily exist. Exit matlab. Mainly because of atmosphere. Inside the bracket, what shall we write? Atmosphere से हमको क्या चाहिए? Very bright है, बहुत bright है. मुझे किसी ने atmosphere से क्या चाहिए जो आपको पसंद है ले लो.
एंड हाइड्रोस्फीयर। तो तुरंत बोला ये मालूम है सर, मालूम है। बोले क्या है सर? पानी है, गटर का पानी जो आपने बिल्डिंग से। ब्रैकेट में लिखो वाटर, कमा soil, vegetation, etc. In the last sentence, then we are watching this video. तो तुरंत मुझे किसी ने बोला सर वीडियो देखने के बाद आप क्वेश्चन पूछेंगे। बोले क्यों? तो नहीं चाहिए सर। So shall I ask questions based on video? Shall I say which kind of question I'll ask? सरप्राइज है। सडनली मुझे पूछा सर ऐड आया था बीच में, वो क्या था? वो यूट्यूब को पूछना, मैं से क्या पूछा। अच्छा, राइट अप। It is spherical in shape. It is spherical in shape and equidistant. Equia, E-Q-U-I. Distant, not distance. From sun, which signifies neither too hot. ब्रैकेट में कौन सा प्लैनेट का नाम लिखेंगे? मरकुरी, है ना? मरकुरी सन के बाजू में है ना? Nor it is too, T-double-O, too cold. Neptune. हो गया। ए प्लूटो किधर गया है? प्लूटो गया ना? अच्छा, मेरा बिल्डिंग के बाजू में कुछ है उसका नाम प्लूटो। हाँ सर, वो कभी कभी क्लास करने जाते हैं, कभी कभी नेबर का साड़ी पकड़ के खींच के लेकर आता है। मतलब साथ में आंटी भी रहती है साड़ी के अंदर, है ना? ओए घर में है डॉगी? मेरे मम्मी ने बोला तेरे रहते हुए और कोई डॉगी कर सकता है क्या? ऐसे मम्मी ने डायलॉग मारा। चलिए कल से मारेंगे, बोल देता हूँ। चलो लिखा प्लूटो, हेंस, हेंस नेपट्यून लिखने की? फुल स्टॉप। प्लूटो लिखना, सॉरी नेपट्यून लिखना। प्लूटो तो आउट ऑफ। हाँ तो मैंने नेपट्यून नहीं लिखने बोला। आपका अच्छा, अपना ही ज्योग्राफी है रे, इनकम चेंज कर लेते हैं, है ना? देन व्हाट डिड आई से? हेंस अर्थ occupies, the earth occupies a prominent place, prominent in our उसको मैं R, in our dash system। किसी ने नीचे लिख दिया कंप्यूटर सिस्टम। कौन सा सिस्टम आएगा? वेरी गुड। उसने तो बोला JBL माइक्रो सिस्टम। चल, अभी somebody ask you about the earth, what will you say? बोलेगा लेक्चर अच्छा था बट मुझे कुछ समझा नहीं। चल, shall I show you the video with your permission? तो क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा, रिलैक्स देखिए। In the past few billion जरा years, pronunciation ऐसे ही है। Earth has been pummeled by asteroids, crashed into other planets, and frozen over several times. Not to mention being ruled by all kinds of crazy life forms. Sometimes it's a wonder that our blue homeworld has survived it all. But if we want to take a whirlwind tour of our planet's history, we'll have to start way back at the very beginning. Some 4.5 billion years ago, our solar system began to emerge out of a dense cloud of interstellar gas and dust. This cloud collapsed into a swirling disk of matter that got hotter and hotter and hotter until hydrogen fused into helium. And just like that, our sun was born. And baby Earth was on its way too. After the birth of our star, all the matter on the farthest ends of the spinning disk began to clump together. These clumps would be the seedlings for the planets and moons in our solar system. As they accumulated more matter, they grew bigger and more spherical. The
the clumps in the cooler regions of the solar system were mostly made of ice, liquids, and gases. Closer to the sun, all the rocky material formed the inner planets like Mars and Earth. This young Earth was incredibly active, volcanically speaking. It spewed out gases like hydrogen sulfide, methane, and carbon dioxide. There's methane, huh? These gases made up the very first atmosphere on our planet. Early Earth was constantly bombarded by large asteroids and comets, and soon Earth experienced an even more violent collision. Theia, a planet the size of Mars, slammed right into our young world. Which is This the first epic planet? collision Theia, threw Theia. chunks of matter So it all Earth के अंदर around घुस गया। Earth's orbit. Yeah. And then gravity ठीक है। bound them together into what we know now as the moon. On this hot How many early billion or there were billion? no oceans. 8 billion years. All water existed as gas. But 3.8 billion years ago, our planet cooled enough for water to condensate and become liquid. The very first primitive ocean covered this young Earth and turned it into a water world. H2O is an essential ingredient for creating living things. So, with all that water, life appeared on Earth about 3.7 billion years ago. These earliest forms of life were microscopic organisms, but it was nearly a billion years after that that some of these organisms changed the course of the world. Stay as a water world very long. Soon, the very first continents emerged from the ancient ocean. Scientists call them cratons. As more and more land rose from the ocean, the very first supercontinent appeared on the planet. Valbara wasn't exactly a supercontinent. It was pretty small. Scientists think it was smaller than the continent of Australia. Around 2.4 billion years ago, cyanobacteria evolved to become our planet's first photosynthesizers. Finally, we had some oxygen producers to make Earth's atmosphere much more hospitable. And the rest is history, folks. Just kidding, we've still got a long way to go. With all this new oxygen, Earth's atmosphere had much lower levels of carbon dioxide. And that made the planet icy cold. Much of our young world froze over as Earth saw its first ice age. Now, as Earth's atmosphere was changing, the continents were moving too. They broke up and reassembled into the next supercontinent, Rodinia. Rodinia was a real supercontinent. It may have been the largest supercontinent to ever cover the planet. And life? Well, life finally became more complex. But then something happened. Rodinia broke apart and a new supercontinent assembled. This one was called Pannotia. Then, between about 540 and 485 billion years ago, there was an explosion of new life. This time was called the Cambrian explosion. And the animals that evolved during this period had hard body parts, like shells or spines. The most famous of all were the alien-looking trilobites. Around 440 million years ago, the climate suddenly shifted and the temperature of the ocean changed dramatically. Earth saw its first mass extinction event. This was the Ordovician Silurian extinction, and a majority of the life that had been spreading around the planet vanished. Many of these life forms laid the foundation for the ecosystems that we have on Earth today. Somewhere between 420 to 350 million years ago, the first trees arose from Earth's soil. And the first animals made their way to land, too. 2
250 million years ago, the planet was covered by our last vast So we are closing supercontinent, now. Pangea. Clear. Sadly, it was also during this period that Earth witnessed the greatest mass extinction event in our history, the Great Dying. Huge amounts of greenhouse gases and accelerated global warming wiped out about 90% of all species on Earth. But this mass extinction helped pave the way for the next wave of animals to evolve. 240 to 230 million years ago, the first dinosaurs appeared. For the next 150 million years, they ruled the land. If you were there, you'd have witnessed the gigantic sauropod Argentinosaurus, the largest land animal ever. Or you might have been chased by one of the Earth's greatest apex predators, the T-Rex. And you'd also witness Pangea breaking up and forming the continents we know today. Okay, you may already know where this is headed. 66 million years ago, an asteroid slammed into our planet, right where Mexico sits now. It coughed up so much debris into the atmosphere that it blocked out the sun. This led to devastating climate changes that caused the dinosaurs to die out. In the next wave of emerging animals, mammals became more common. Around 6 million years ago, the earliest known humans started walking this world. This species was called Sahelanthropus, though they still likely walked on all fours. 4 million years ago, early humans began to walk upright, and about 1 million years later, they developed the first known tools, which they used to break things. Some 800,000 years ago, things sparked. These early humans discovered how to control fire and could now cook food and provide themselves with heat. Their brains continued to evolve, now more rapidly than ever. These humans learned to interact with each other and the surrounding world in whole new ways. Then, between 40,000 to 15,000 years ago, all other human species besides Homo sapiens went extinct. 10,000 years ago, Earth saw its earliest farmers. These previously nomadic humans stopped wandering the planet and finally put down their roots. Jumping way forward to about 250 years ago, the Industrial Revolution took place. We went through major technological, socioeconomic, and cultural transformations. Rural-based farm societies became more industrialized urban ones. Our human population continued to grow. By 1804, we reached 1 billion. By 1927, we hit 2 billion. And since the 1960s, the global population has risen faster and faster to where it is now, at over 8 billion people. And now there's a new threat to human existence and any other forms of life here on Earth. Climate change. Temperatures and sea levels are rising worldwide, and biodiversity is declining. We could be on the verge of another mass extinction event if things don't change. But that's a story for another what if. Science क्यों? हाँ, geography में कर ना. हाँ, क्यों नहीं? भाई geography we touch all the subjects of science. You don't know? But then we don't do anything in detail. Because अभी 10th में ना, we teach them even numericals also. समझा क्या? आपको geography से डर लग रहा है? नहीं लगता. तू डरना है? मैं है ना? एक मिनट चाहिए मेरा भाई. Wait, share the screen आएगा ना? नहीं सर वही से speed second Correctly, then why share then tag change the camera, is it? नहीं सर नहीं सर Wait. बोर्ड के बाजू में drag बटन होगा हाँ सर drag कर दो
So let's write the shape of the earth and its proof. Heading. The shape of the earth and its proof. Yeah, but then also, this is not the camera. And its proof. Anybody using a Morning Star textbook? Boy, yes. है अभी है? Yes, बोला अभी ढूंढ रहा Morning Star evening night. तेरा है लगता Morning Star था? कौन सा? हाँ तो दे ना मुझे चाहिए. I have to be able to do the heading. Hey, listen, before I start explaining, the first one that I have showed, it is the sighting of the ship. Correct? Yeah. Are you seeing? If Earth was flat, you see any point of the place, you see the full ship. Now this is spherical. Now I'm standing here. First, I will be able to see only the mast. What is mast? That front portion. I will never forget the movie called Titanic. I hope you also. मतलब उसमें वो नहीं है, वो है सर. ये दोनों लोग सामने खड़े हो जाते हैं, and जब शिप डूबता भी है तब भी सामने रहते हैं. फिर मैंने बोला खुद के निकल जाओ, टेंशन है करके. So we believe if the earth was flat, what will happen? What will happen? It could have been like this. But since it is spherical, as the ship comes near, then only I'll be able to see the whole ship. If the earth would have been flat, there would be Then there is no such position. there would be no core. Correct. Then that Bedford level experiment, all are planted at the same height. The sticks also same. If earth was flat, what it will see? Any point of time, you will be seeing the stick as same. But since it is spherical, are you seeing? The longest will be the front one. He's checking, sir. And the shortest one will be the farthest one. Because मैं बहुत दूर से देखूंगा, मुझे पूरा स्टिक नहीं दिखेगा. एंड ये बल्जिंग है ना, अर्थ ऐसा है ना, तो मिडिल वाला जो स्टिक है वो सब दोनों से भी ज्यादा बड़ा दिखेगा, जबकि उसका लेंथ भी सेम है और जितना मैंने डिग करके अंदर रखा वो भी सेम. देन सम अदर एक्सपेरिमेंट्स, ये सब है जो मैं नोट्स में दूंगा. अर्थ कोनिकल होने की वजह से ये जो पार्ट है, आई विल ऑलवेज सी वर्टिकली अप, spherical extension. And then earth is flat, not flat but spherical. Look at the sun, which is giving heat to, which is very closer, which is that equator. सबसे ज्यादा इक्वेटर में हीट ज्यादा है, एंड सबसे कम हीट किधर है? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. अगर वो फ्लैट होता, हाँ, अगर वो फ्लैट होता, all the heat will be easily transferred to all part of the earth. Are you understanding? So my notes will not be the notes like your school teachers. I'll be giving a very short, but at the same time straightforward notes. And I think volume भी मिला है geography का. So next time onwards, please bring your volume also. Right? One मिला है क्या geography का? देख. Volume का geography का. हाँ रहने दे, मैं lecture के end में इसको introduce करता हूँ. 9-18 क्या होता है यार? इतनी लेट थोड़ी नहीं. वो एक घंटा. हाँ वही. 8 रहना चाहिए my dear friend. रहने दे. Right. So this is what I am going to give it to you in a very nutshell. Is it okay? Sure. The first experiment you should write Shape of the earth and its proof. Earth, the third planet. Of our solar system of our. Certain words I may not be pronouncing the way you pronounce. So please bear with my English. I remember while dictating, I pronounce us. And you know, by 12th standard, forget about 9th and 10th, they write this word. Remember S. For 12th, sir, this is S. Why free S? ठीक है. And when I say this word, flowers, so I'll say flowers, correct? No need me to teach English for you. And you said, no, it's said. And scent is this. Everybody knows? And scent is this. So now I said as means you write this.
You write this. You don't write this. Okay, na? So English is our mother tongue. कोई मराठी माणूस आहे. मुंबईमध्ये फक्त मराठी आणि इंग्रजी मीडियम पण आहे ना. So I'll try to stop looking bit of Marathi and English. So, what did I say? Earth is the third planet of our solar system, and it is spherical in shape. And it is spherical in shape, which is proved with the following. Which is proved as following. Now, 1. So I'll also write it for your simplicity. What is the first proof that we are going to write? Sighting of a ship. Yes. SIGHTING. Sighting of a, what is it? Sighting. Okay, sighting, what you don't understand, is it? Seeing of a ship. Or in South, if you go now, look at the sight marne jata. Very smiley cat. Ship को. अरे ये बात आपको समझ में आ जाता है? नहीं आता. Even I don't like it. Sighting of a ship. Viewing of a don't you write that word? Viewing or change. Ship. If sighted from a long distance. Sighting. अभी क्या करेगा? Past perfect कर लेकर. और sight from a long distance. See. हाँ ठीक है. Seeing from मुझे वो word चाहिए. Sighting word ही चाहिए. Sight is ठीक है. You're absolutely right. Thank you. Seen from a long distance. Only. Mast. What is mast? The front part. MAST. Must. Of the ship is seen. Ship is seen. Mast. ऐसा पूरा confused है. तू जरा read करेगा. तो क्या? हाँ you read. Sighting of a ship. The shape of form. It's formal. Wait. You read boy. Wait. You read what you have written. If the ship is Is seen from a long distance. Only the mast of the ship is seen clearly. Come on. One it progresses nearer, or one it sails nearer. Sail करता है ना ship. When it sails, SAILS, nearer. Only the mast of the. आप लोग मत लिखो उसके लिए बोलो. Only the mast of the ship is seen. आप लोग देखो. When it sails nearer, one can see. When it sails nearer, one can see the entire ship. Proving क्या है? Its spherical nature. But can see the entire ship. Ship. तो देखा नहीं तुम? अरे वो नजदीक आएगा तभी तो पूरा शिप दिखेगा. दूर से उसका मास्ट ही दिखेगा. My God, he needs a unique interpretation of my mind. But if it was flat, proving its spherical nature डाल दिया ना? But if it was flat, what is it here? Earth. Confusion. If it was flat, one can see the full view of the ship. That's it. अभी read करके देखो. Actually मैंने उसमें read किया कुछ नहीं, अपने one word से दे रहा हूँ, है ना? चलो अब देख लो. Any corrections, any mistakes, you only correct. Don't ask me. Next lecture से वो कौन है? वो किसकी क्लास से है? That girl. School. हाँ बोल देना आप है ना? She is only today absent. कल है. हाँ बोल देना geography lecture अच्छा था, मतलब geography lecture मिस मत करना. सर पूछ रहे थे तुझे
है ना? Let's see. I always try to become better, best of all times. कुछ क्यों? क्योंकि अभी 7 मिनट के बाद करता हूँ। टाइम है बहुत। ओके, चलो सेकंड पॉइंट, दी बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट। मुझे हमेशा याद है इसका बेड भी डाला है, फोर्ड भी डाला है, बट एक्सपेरिमेंट स्टिक्स के साथ किया है। उसका नाम है साइंटिस्ट का, दी बेडफोर्ड, BDFOR लेवल एक्सपेरिमेंट। ओके, हाँ उसका नाम है, एक नाम इसका पूरा नाम। यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में लाइक है उसका नाम। Next time I visit London, I will check for this. बड़ी शोर में तो मार्केट 100 साल what did I say? The Bedford level experiment in England proves the spherical nature of the Earth. Bedford level experiment in England proves the spherical nature. Sorry, spherical shape. The nature here. Full stop. I think मैं थोड़ा स्पीड्स कम कर लूं डिक्टेशन का, बहुत people are getting trouble, ये भाग रहा है, वो तो छोड़ रहा है ना? And he's coolly right. आप बोलो सर, मैं तैयार। ओ भाई, क्या चल रहा है? मतलब what is happening? Cool, huh? Hey, you tell me I can reduce the speed, man. ये भाई बोल, चलेगा? मैं लिखेगा, मतलब तू लिख रहा है ना? नहीं, काम करते हैं। अभी नोट देना, एक पॉइंट के बाद बंद करो। क्यों? बाकी पॉइंट स्कूल घर से लिखे नहीं। बहुत अच्छा है यार, मतलब अच्छा है। In which 3 poles of equal length were 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 fixed same distance of 5 kilometers. Same distance. एक दूसरे से, हाँ, सेम इंटरवल लिखो, डिस्टेंस लिखो, अब 5 किलोमीटर। इसको एकदम शॉर्ट एंड स्वीट बनाना है ना? स्वीट इन द सेंस कि याद रखने के लिए स्वीट, हाँ हो सकता है जब मार्क्स अच्छा बने, नहीं होता है तो अभी तो अभी से मिलेगा ना, मैं मिला है ना टीचर का नाम, तो फिर साइड में है ना? कोई सा टीचर बने हुए अंजू सिंह अच्छी है, टीचर पढ़ाने में राइट, जो टीचर इस ढूंढ रहा टीचर का कौन है, पता है मुझे भी नहीं मालूम है। अरे आप टीचर के बारे में कुछ नहीं पूछते हैं, अरे ही और शी उसमें भी डाउट शी कंफर्म। टुमारो यू शुड गो एंड आस्क हर, मतलब किसने मुझे तो एलिगेशन बोला है, मोबाइल नंबर नहीं रेडियो जो ऑफ द कैमरा, माय कजिन नॉट कजिन ब्रदर ओनली, उसका लड़का अभी थोड़ा बड़ा है, अर्लियर आई यूज्ड टू गो टू माय होम टाउन ना इतू सर, उसके शादी में मैं नहीं गया था, मेरा भाई का शादी में, तो आफ्टर 3 और 4 इयर्स आई वेंट। मेरे भाई बोला यार तो बात सब जाता है, बता रहे तो सीधी चल रहा था उसका शादी का, ये बहुत चिंटू था ना, बहुत मस्ती कर लुटा के देखना था ना शादी का, बोला किसका शादी है मालूम है क्या? मालूम नहीं, मेरे डैडी का ही। तो सब लोग है पर आप किधर था? तो सब लोग है, तू किधर है? हाँ मैं किधर है? मैं तो जाकर माँ से पूछ मेरी बात ठीक है, एक सुनने वो है ना, वो कॉन्फ्रेंस जो आया ना, मैं किधर शादी, अरे बता मैं किधर है? और बेचारी कैसे समझाएगी ना, ही इज ओनली 9 years old, बता मुझे शर्म आ रहा है, आप लोग की शादी में मैं नहीं था तो हम कर ले, तुम बात ना पीछे। हाँ आफ्टर 2-3 years अगेन नहीं भाई, ये भाई सब फिर से
मालूम है क्या मैं गिरा था, मैं गिरा था तो नहीं हुआ था ना, मतलब फिर उस टाइम पे क्यों नहीं बोला था, अभी मुझे नहीं समझा, अभी मुझे सब मालूम है। तो क्या मालूम है, क्यों बताऊं, कि जैसे आपको बोला ना सेल फोन नंबर, तो मैं कभी कोई बाइक लेके उसको पिकअप करने जाता हूँ, एनीवे लिटिल गुड, मतलब देखो ना जैसे क्लास टीचर स्मिता है, ऐसे बहुत ब्यूटीफुल है, खुद ही बोल देता था, और शादी नहीं हुआ है तो मोबाइल नंबर पक्का ना, ये भाई सब जाके क्या पूछा टीचर से मुझे मतलब नहीं है। 2-3 दिन के बाद मैं ऐसे ही उसको पिकअप करने गया, तो एक मैडम आई थी, सर आप टीचर है, कहा, पापा मतलब छोटा था, आप बोलने से आता, ये सब आपको किसने बताया, कल ये स्टाफ रूम में आया था, इनसे आप मोबाइल नंबर पूछा, तो आपसे क्यों पूछा है, आप ही ने तो बोला है मोबाइल नंबर लेकर। अभी मैं पूछता हूँ क्यों चाहिए मोबाइल नंबर, अरे बात करेंगे देख, वो गुड़िया है, उसका शादी भी हो गया है और 3 बच्चे हैं, मैं पहले तो पूछता था, पहले मैं छोटा था ना, मुझे मालूम नहीं था क्या चक्कर चला में उधर रास्ता है। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ज्योग्राफी जितना डिटेल में पढ़ेंगे ना उतना आपको क्या बनेगा, जनरल नॉलेज बनेगा। So whenever I say anything about Earth, you remember only about the ऐसा बोल जाना है। What we were discussing, shape of the Earth, shape of the Earth। चलो ये बेडफोर्ड का ना शॉर्ट में दूंगा एक ही लाइन में, when viewed from when viewed from a distance, ये ढूंढ रहा है, अरे नेक्स्ट पेज में लिख, वही पॉइंट है देख, when viewed from a distance all the 3 sticks appeared smaller, or can I say smaller का opposite क्या लिखेंगे, हाँ longer, correct है, proving ये longer में क्या हंसते हो रहे proving all the 3 sticks all the 3 sticks did not view, यार मैं ही भूल गया, तो बताइए sticks, ये अभी पूछ रहा through which, what did I start the sentence, all the 3 sticks looked smaller or longer, proving the spherical shape। अभी पोल स्टार, एक्चुअली पोल स्टार के ऊपर भी एक बड़ा स्टोरी है, किसी को मालूम है, कैसे में ज्योग्राफी कभी सिखाएगा अगले पीरियड में, ओह माय डियर, ठीक है, actually it is not a story, it's a reality actually, if you study Bible, anybody Christians here, you are, don't mind, you follow which whole team, दोनों ने follow which church here, when Jesus Christ was to be born and angels walked in the night, ये तो शायद बोला भी रहेगा, सबको मालूम है स्टोरी, पर they were knowing कि किस डायरेक्शन में जाके मदर मैरी को ढूंढने का है ना, हाँ यू नो, तू क्यों ढूंढने का तुमको, then they said you have to look at a star which is the biggest, and that star आज भी आप रात को देखेगा ना, it is always in the north direction, and they looked at the star and they started walking, फिर बीच में किसी ने 2-3 में से 2 गायब था, तो क्या हो गया, खड्डा नहीं देखा, ऊपर देख के चल रहा था ऐसा कुछ नहीं था, they were all walking, so even today they say this north pole star appears to be big and it is in one corner, and अगर earth flat होता, can we sight a star in one corner, नहीं सर हर जगह दिखेगा, ऐसा flat है, अंडरस्टूड। तो आज मैंने देखा है, आजकल मम्मी पापा तो बच्चों को रात में ऊपर टेरेस पे लेके जाके नहीं दिखाते, मैंने देखा कुछ तो सीलिंग में लगा देते हैं, और जैसे लाइट बंद होता है ना वो एकदम ट्विनिंग, ये नहीं है आपके घर में, हो गया टाइम, अच्छा अभी तो बड़ा हो, बोले जरा अच्छा पोस्टर लगा सारा, देखते देखते सोचते, तो when that light goes off ना, the stars twinkle, and बच्चा को मैंने एक दिन पूछा how many stars, I counted sir, then after that I slept,
तू कहाँ से बेड में बैठ के तू काम कर? You don't know. You come to my house. It's on the ceiling. तेरा पापा छपड़ी का. No. Imagine it. Oh, that is the reason it never comes near to me. मतलब जैसे कि तू स्टार के बारे में देख. तो ये जो नॉर्थ पोल स्टार ना बोलता है कि वो हमेशा एक कोने में ही दिखता है. अगर अर्थ फ्लैट होता वो कोना नहीं रहता है ना, राइट? एंड ये और भी तेरा बाइबल का बोलो, डोंट माइंड दैट. Then this child takes birth and these gospels बोलते हैं ना उनको, जो एंजल्स जाता है तो बच्चे को उठाता है और बोलता है कि he is the person who is going to save us. हॉस्पिटल में होते हो, तीन राजा थे हॉस्पिटल तो बताइए एक बार फोकस. तीन राजा थे कि नहीं सर? वो क्रिसमस की भी स्टोरी है ना, क्या तीन राजा नॉर्थ पोल स्टार को फॉलो करते हुए रानी जीसस क्राइस्ट के पास में जाते हैं. अच्छा और कौन होते हैं उनको जीसस गिफ्ट क्राइस्ट? देते हैं. हाँ क्या देते? वो पता है. अच्छा चल तेरी स्टोरी सुनता है. Now when we understand this Bible in brief, na, in those days only this Catholics and this Romans, correct? They proved it that this pole star is showing only one direction. Which is that direction? Which is that direction? North. चलो एक लाइन में लिखने के लिए. Location of a pole star. In the north direction is not seen at 90-degree angle, है ना? फ्लैट रहेगा तो 90 डिग्री पे नहीं दिखेगा, मतलब 90 डिग्री में ही दिखेगा. But it is clearly visible. 90-degree angle. 90 डिग्री मतलब स्ट्रेट नहीं दिख रहा है ना? But it is clearly visible at an angle, at different angles from equator, Tropic of Cancer and Capricorn. मतलब ये तीनों जगह से अलग-अलग एंगल में दिखता है. Moving Cancer and Capricorn. Equator, Cancer and Capricorn. He does this, proving the spherical shape of the Earth. So you are part H1. so tacky. So tacky. It was a wonderful lecture for you guys. Sorry, it was a wonderful meeting with you guys.